Hello everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are practicing problems, learning concepts. In this video, we are going to talk about how we can handle continuous charge and mass distribution cases where we are asked to calculate moment of inertia, electric field or magnetic field sort of. So basically, we are going to deal with when charge is distributed on a body, when mass is distributed on a body, how to take element and then how to proceed with the calculation. So I will be taking some example based through that only I will make you understand. So yeah, let us start with this one. सो बेसिक जो स्टेप्स होते हैं ना, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विद द एलिमेंट. ओके, सो एलिमेंट कहने का मतलब आई मीन if charge is distributed in a space, then first you will be picking one small space, and because of that you will be calculating electric field, let's say, and then for calculating total electric field at certain point you will be integrating that one. Okay, so first step is selecting element. I will deal with how to select the element, so that we will do. Yeah, second is write the concerned value for the element. That is what I said. अगर electric field निकालना है तो you should know for that element taken what will be the value of electric field at the concerned point. Okay, and then definitely we need to integrate. So these steps we need to what follow. चलो एलिमेंट सिलेक्शन की तरफ चलते हैं. सो एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि चार्ज और मास, जैसा भी क्वेश्चन हो, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग व्हाट. I mean, if it is distributed along length, on area, or in volume. Okay, so if let's say you have a rod, and this rod thickness is very small, so this is negligible, and it has only length. So if something has only length, so what I want to say is, let's say this is line charge, okay, and on this you are having positive charge. So what it is made up of? You can see here, charge is lying along the length. So if you take a small element, what you will be doing, small portion इससे आप cut कर लो. सो कट किया मैंने. जब मैंने इससे स्मॉल पोर्शन कट किया, आई एम गेटिंग ए स्मॉल लेंथ, राइट. सो दिस विल बी द एलिमेंट. सो इफ चार्ज और मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ, योर एलिमेंट विल बी ए स्मॉल लेंथ. इफ चार्ज और मास इज ऑन द एरिया, जैसे आप देख लो, सपोज कर लो ये डिस्क है और इस पे तुम्हारा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो यहाँ पे अगर आपको छोटे एलिमेंट की, आई मीन एलिमेंट की बात करनी है, एलिमेंट कहने का मतलब इस कंटिन्यूअस बॉडी का एक छोटा सा पोर्शन, डन है. सो वो छोटा पोर्शन एक स्मॉल एरिया हो सकता है. अभी के लिए मैंने ये ऐसा कुछ दिखाया. सो स्मॉल एरिया यू विल बी टेकिंग हियर एज द एलिमेंट, because charge is distributed in area, so element will be area. But again, you need to select that area very carefully so that your calculation gets easier. Okay, so that I will be discussing later on. So this is this. And if your charge is distributed in a volume, then in that case you will be taking a small volume as the element. So नाउ आई नो कि आप एलिमेंट निकाल पाओगे. ठीक है. सो एक बार जब आपने एलिमेंट निकाल लिया, देन यू शुड नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, लेट्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट एलिमेंट. सो अगर आपने एक लीनियर चार्ज लिया है, एलिमेंट छोटा लेंथ लिया. छोटा लेंथ कहने का मतलब क्या, charge on this length, let's say dq, is a very small charge, so it can be treated as a point charge. So because of this point charge at any distance, let's say r, we can easily write electric field k dq by r ka square. So here for this element we know what is the formula for electric field. So ये है तुम्हारा second step. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आना चाहिए फॉर दैट एलिमेंट. जैसे आपने डिस्क लिया, ठीक है, डिस्क में क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है. जैसे लाइन चार्ज का एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, रिंग. रिंग में क्या है, तुम्हारा इसी लाइन को आपने कर्व कर दिया, एंड देन दिस इज बिकमिंग रिंग. डन है. सो हियर ऑल्सो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट, अलोंग लेंथ. सो हियर इफ यू टेक अ स्मॉल एलिमेंट, you will be cutting a small length. So this small length will behave like a point charge, and for point charge at any distance you can write electric field, you know the formula. but disk के केस में आप छोटा एलिमेंट कैसे लोगे, सच दैट, छोटा एलिमेंट हमें एरिया लेना है ये तो पता है, बट आप कैसे लोगे सच दैट यू नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट एलिमेंट. सो आई विल सजेस्ट यू, जैसे आपने बहुत जगह किया होगा, आप एक छोटा सा रिंग लो. जैसे डिस्क कैसे बना होगा, एलिमेंट का ये भी एक मतलब होता है कि वो चीज किससे बना है. जैसे अगर मैं छोटे छोटे रेडियस का रिंग लेती जाऊं,
such that the radius of ring is changing from 0 to r continuously, then by stacking such rings together you will be getting disk of certain radius. Done है? So disk is made of what? Ring. आप कह सकते हो ring उसका element है, ring उसका basic part है of which it is made, right? So ring can be taken as the element. आप कहोगे मैम रिंग के पास एरिया कहाँ है? रिंग तो रिंग अगर हमने लिया तो इसके ऊपर चार्ज तो लेंथ पर है। डन है? सो हाँ, ये आप सही सोच रहे हो। डू वन थिंग, टेक अ रिंग ऑफ रेडियस आर सच दैट दिस थिकनेस ऑफ रिंग इज डी आर। सो मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसका थिकनेस आप ले लो डी आर। सो इस रिंग को जब आप खोलोगे तो ऐसा होगा। खोल दिया मैंने। सो इट्स लेंथ इज हाउ मच? 2 पाई आर, एंड इट्स थिकनेस आई हैव टेकन एज डी आर। सो इट्स एरिया वी कैन राइट, दैट इज 2 पाई आर डी आर। And first of all, we should know the formula of electric field because of ring at certain point. So if we know, then we can solve for disk. So in disk, ring is the element. Because of ring element, we know what is the electric field formula at certain point. We can put it and then integrate that value such that limit we will be taking such that it will cover the whole disk. So r here is the variable that will change from 0 to r. So I will be doing that thing for you. Or उसके बाद means overall in aggregate you have to remember these two things. First you should know how to select element, and second you should know the value of electric field or moment of inertia or whatever you are calculating because of that element at the point you are going to calculate electric field, magnetic field or moment of inertia, whatever it is, or gravitational field. Okay. सो फॉर चलो हम एक काम करते हैं, रिंग से सॉरी लीनियर चार्ज से स्टार्ट करते हैं। सो हमने एक लीनियर चार्ज लिया है and it has a total charge q, so linear charge density first of all it define। जैसे यहाँ पे मैंने बोला select the element, charge एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे कर रहे हो? बाय सीइंग कि चार्ज कहाँ है, लेंथ पर है, एरिया में है या वॉल्यूम में है। ठीक है, सो लेंथ पे जब चार्ज होता है देन वी डिफाइन लैम्डा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। व्हेन चार्ज इज इन एरिया देन वी डिफाइन सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड व्हेन चार्ज इज इन वॉल्यूम वी डिफाइन रो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो लैम्डा मैं लिखूंगी हर जगह, दिस इज लैम्डा क्यू बाई एन। ओके, लेट अस से मैं इसके मिडिल पॉइंट पे निकालती हूँ। सो यहाँ पे कहीं d डिस्टेंस पे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे आप निकालोगे? सबसे पहले आप एलिमेंट लोगे। सो ये थिकनेस हमें नेग्लेक्ट करना है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर रॉड। ठीक है, सो चार्ज इज ऑन व्हाट? इट इज ऑन लेंथ, राइट? सो लेट अस टेक अ स्मॉल लेंथ। उससे भी पहले आप यहाँ पे ओरिजिन डिफाइन कर लो। सपोज कर लो ये पॉइंट मैं ओरिजिन ले रही हूँ। ठीक है, सो इसको मैंने 0 0 माना। Okay, so at any distance x I'm taking a small length, so x ka small change I'm taking here, so that you will call as dx। and then so element आपने ले लिया by seeing कि charge is on length, so small element will be small length। now first calculate dq। so dq will be equal to what? Linear charge density, that is charge per unit length। so unit length में charge lambda है, dx length में charge क्या होगा? lambda dx। sorted। so this is this thing, dq आपको मिल गया। now you calculate electric field because of this element at the point you are interested in calculating electric field because of the whole this rod thing, right? so आप क्या लिखोगे? de electric field will be k lambda dx kq by r का square। so this is x, this is d, this will become x square plus d square, let's say this is z square। okay, so this is equal to this। okay, सॉर्टेड। सो दिस इज दिस। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे मिडिल में ये पॉइंट लिया है सच दैट दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग द रॉड, इफ यू आर गेटिंग इफ यू आर पिकिंग वन एलिमेंट एट x डिस्टेंस दिस साइड, then at same distance this side you can pick one element always, right? If they are equally dividing, if this line is dividing this rod into equal parts। so मैंने एक स्पेसिफिक केस लिया है। अब यहाँ से देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डायरेक्शन में? डन है। एंड दिस ऑल्सो विल बी डी ई बिकॉज यहाँ पे जो इस ये एलिमेंट लिया यहाँ पे भी चार्ज लैम्डा डीएल है। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो व्हाट? जेड स्क्वायर, बिकॉज दिस इज एक्स and this is d, so this is x square plus d square, so this is also d z square, so this d and this d are same। देन है। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे यहाँ पे चेक कर लो, जैसे लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा एंड सो दिस ऑल्सो विल बी थीटा, दिस इज थीटा। सो डी का एक कंपोनेंट इधर होने वाला है, दूसरा इधर, एंड इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? डी ई। ओके, चलो मैं यहाँ से इसको हटाती हूँ।
So this will be your how much DE sine theta, right? And here it will be how much DE sine theta. So sin theta वाले तो कट हो जाएंगे and this direction में तुम्हें क्या मिल रहा है DE cos theta. Because of these two it will get added. So basically यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया ऐसा ही इधर ले सकती हूँ यहाँ लिया I can take here further this side here you can take so I mean you can take one element this side at this at certain distance then at the same distance this side also you can take one element क्योंकि ये जो point है इससे जो हम line draw कर रहे हैं that is dividing this rod into two equal parts. So basically in order to calculate electric field at this point we need to add what d cos theta. add करने का मतलब क्या होता है integration. So you integrate it right. So d का value आप put कर लो. So d is k lambda dx divided by this is how much k lambda dx z का स्क्वायर दैट वाज योर x स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर cos थीटा देखो क्या होगा cos थीटा d बाई दिस दिस इफ दिस इज z देन d बाई z सो दिस इज d बाई z z क्या है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रूट अंडर okay so this is your electric field and if you see here carefully आप इसके values को ध्यान से रखना let me integrate it for you. So k lambda d. These are constants, right? And then dx by x square plus d का square. Power कितना होगा 3/2 and इंटीग्रेशन ठीक है नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस थिंग अब देखो मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ नीट और समथिंग यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ बेसिक इंटीग्रेशन थिंग और मैथ्स के हो अगर अवेयर नहीं हो तो बहुत ही बुरी बात है आई मीन you people should be so much aware of this one okay so यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आप पुट कर दो सॉरी ये नहीं बोलने वाली हूँ मैं यू कैन पुट है जैसे इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से एक्स बाई डी टैन थीटा लिख सकते हैं राइट सो आई एम गोइंग टू राइट एक्स बाई डी इज इक्वल टू टैन थीटा सो एक्स इज इक्वल टू डी टैन थीटा आप कहोगे मैम आपने रैंडमली ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिया इसके लिए आपके पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको भी आइडिया होना चाहिए हाउ टू डू सच सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन राइट एंड सच आइडिया ओनली यू विल गेट इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन इफ यू आर इन टच विद क्वेश्चंस सो इसमें मेरी गलती नहीं है अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि अचानक आपको कैसे पता चला ऐसे ही करना है बच्चों का ये जनरल डाउट होता है सो आई विल से मुझे पता नहीं चला आई मीन आई हैव बीन डूइंग सच थिंग्स एंड यू शुड ऑल्सो बी डूइंग थिंग्स क्योंकि देखो अगर आपका 11th फिनिश हो चुका है देन ग्रेविटेशन में आपने डेरिवेशन किया आपने सेंटर ऑफ मास में भी किया आपने फिर क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला बहुत सारे डेरिवेशन किए अभी तक कंफ्यूज हो रहे हो तो आई मीन यू आर नॉट इन प्रैक्टिस ओके अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है चलो आगे लिखते हैं सो के लैम्डा डी अब देखो dx की जगह क्या लिखेंगे हाउ वी विल नेविगेट थ्रू इट x को मैंने d tan थीटा माना है ठीक है सो इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो dx इज इक्वल टू d tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा सो थीटा के टर्म में किया है d थीटा ओके सो दिस इज दिस थिंग अब dx की जगह मैं क्या लिखने वाली हूँ d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो मैंने x को क्या माना x बाई डी टैन थीटा था x को d टैन थीटा माना तो ये वाला टर्म देखो क्या हो जाएगा इसको आप देख लो एक्स स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर एंड दिस इज पावर 3/2 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड डी स्क्वायर बाहर आएगा दैट विल बिकम डी क्यू and then this will become how much sec cube theta so let us put it there so this is going to be your sec cube theta and then this is d square square or cube है right so this is dq sec cube theta d theta अब देखो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है यहाँ पे वेरिएशन में भी आपको ना एक रूल समझने की जरूरत है एंड दैट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रूल व्हेन आई स्टार्ट विथ क्लास 11th I mean, first class used to be general physics. So in general physics, we talk about such things. एंगल मेजरमेंट आप कैसे करते हो जैसे दिस इज थीटा इक्वल टू जीरो लाइन व्हेन यू गो क्वाड्रेंट याद करो व्हेन यू गो दिस साइड यू टॉक अबाउट पॉजिटिव एंगल व्हेन यू गो दिस साइड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट यू टॉक अबाउट नेगेटिव एंगल so when you measure in clockwise direction angle is negative when you measure in anti-clockwise direction from the reference line angle is positive so here our reference line is this one okay so angle ka measurement you do from where from this line so this side meaning you're going in which direction anti-clockwise am I right
Yeah, and this way if you're going in clockwise direction. So if this angle I will tell theta, then this is your minus theta. ठीक है. सो कुछ ऐसे ये लिमिट भी आपको सही से पता होना चाहिए. सो एंगल इज चेंजिंग फ्रॉम थीटा टू माइनस थीटा. ओके. नाउ लेट अस पुट हियर कि लैम्डा डी, एक डी कट हो गया, सो डी स्क्वायर यूर लेफ्ट विथ, एंड दिस इज कॉस थीटा डी थीटा, and here it is changing from theta to minus theta. So k lambda by d square, sorry, by d, and this is how much, ये कितना होगा तुम्हारा, theta to minus theta we are doing, right? So let us put it here. This will be minus sine theta. Minus sign को बाहर ले लो. So this is your sine theta, and this is from where to where? Let us put it theta 1 and theta 2. दोनों का magnitude same है, but yeah, let us put it like this. So minus theta 2, and यहाँ पे आप क्या लिखोगे? Theta 1. So let us put the values now. Minus k lambda by d, and this is going to be minus sine theta 2, and this is going to be how much? This is going to be minus sine थीटा वन. ओके. सो दिस इज दिस थिंग. अब आप देखो यहाँ पे जब आप इसको माइनस को बाहर लोगे, व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट, यू विल बी गेटिंग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो यू आर गोइंग टू गेट के लैम्डा बाई डी, एंड दिस इज योर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यू आर गेटिंग इन दिस डायरेक्शन एट दिस पॉइंट. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये पॉइंट सिमेट्रिकल नहीं होता, आई मीन लेट्स से यू आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. ओके. सो यू विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस. लेट अस से दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस डी. ओके. सो अभी के केस में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे. नाउ जो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, आई मीन डाउन कंपोनेंट ज्यादा मिलेंगे क्योंकि डाउन में एलिमेंट्स ज्यादा हैं. सॉरी, अप एलिमेंट, अप कंपोनेंट ज्यादा मिलेगा क्योंकि देखो यहाँ से जो भी नीचे की तरफ एलिमेंट है उसकी वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल हैव वन अप कंपोनेंट पैरेलल टू द रॉड एंड अनदर इन दिस डायरेक्शन. सो दिस साइड एलिमेंट्स आर मोर. सो बेसिकली इस केस में जो तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन इन दिस डायरेक्शन, अनदर इन दिस डायरेक्शन. सो ये वाला कंपोनेंट अभी भी कितना आएगा तुम्हारा, के लैम्डा बाई डी, जो भी हमने किया, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू. ओके. और ये वाला कंपोनेंट कितना आने वाला है, आपका ये होमवर्क है, आप करोगे, ठीक है. सो यू विल बी डूइंग एंड देन यू विल बी गेटिंग के लैम्डा बाई डी, and that will give you cos theta 1 minus cos theta 2, where theta 1 is smaller than that of theta 2. ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज हमें इसको पॉजिटिव रखना है, अकॉर्डिंगली यू कैन सी. ठीक है. सो या, दिस इज दिस थिंग. So this one you have to calculate. So at this point electric field will be in two direction, one this way, another parallel to this. Okay. अब देखो दूसरे एलिमेंट का मैं एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ तुम्हें. सपोज कर लो रिंग के लिए निकालना होता है. रिंग में भी क्या होता है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो यहाँ पे मैं अब फास्ट जाऊंगी. सो इस स्मॉल लेंथ के लिए आप निकाल कर देखो, यहाँ पे एलिमेंट क्या लोगे, स्मॉल लेंथ, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ. डीएल लेंथ लिया हमने, इस पे डीक्यू चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज योर डीएल इंटू लैम्डा. इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है इन दिस डायरेक्शन. वैल्यू क्या लिखोगे डी का, के डी क्यू बाई this distance. So let's say its radius is r, and let's say we are calculating electric field at point P, which is at a distance x from its center. So x here is not a variable, it is a fixed distance, right? So x is a constant here, and that distance will be r square plus x square, बिकॉज दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर. सिमिलरली आप ऐसा ही एक एलिमेंट इस साइड भी ले सकते हो. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसे. इफ दिस एंगल इज लेट्स से थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा, एंड अगेन दिस टी both equal in magnitude will have a component in x direction like de cos theta. So 2d cos theta it will become because of these two elements, and d sin theta will get cut. Okay. So in case of ring also you are going to do what, de cos theta आप integrate करने वाले, and that is your homework I would say again, but I can help you with let me take you through कि dq को क्या लिखा हमने, lambda dl. ठीक है. एंड डिवाइडेड बाई आपने क्या किया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, डी कॉस थीटा को ऐड करना है, राइट. सो कॉस थीटा जब आप करोगे, कॉस थीटा कितना होगा बताओ,
cos theta is your x by this. Okay, so this is x by r square plus x square root under. ठीक है, so this is your d, you need to add this to. अब देखो इसमें जो भी कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन. सो हियर k lambda x r square plus x square and power 3/2 all are constant, right? dl is only variable. और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट्स, दैट इज गोइंग टू गिव यू 2 pi r. डन. सो आंसर यहाँ पे बहुत ही, के को आप लिख लो, यहाँ पे ब्रेक कर लो, 4 pi epsilon naught lambda x, dl will become 2 pi r, and this is your r square plus x square 3/2. So 2 pi will get cancelled by 2, and this will become how much? This is lambda के टर्म में अगर मैं लिखूं तो lambda x r, right? Divided by how much? 2 epsilon naught, and this is r square plus x square 3/2. लेकिन अगर तुम्हारा q के टर्म में आंसर दिया हो ना, तो q को आप क्या लिखोगे? q को लिखोगे लैम्डा इंटू 2 pi r. डन है? डन है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ q. सो लैम्डा की जगह आप क्या लिख सकते हो? q बाई 2 pi r. सो बहुत जगह आंसर ऐसे दिया होता है, जैसे k को अभी मत ब्रेक करो, आप देखो आंसर हमारा क्या आया, k लैम्डा x बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2 इंटू 2 pi r, राइट? एंड लैम्डा इंटू 2 pi r क्या है? तुम्हारा q है. सो यहाँ पे के क्यू एक्स बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, ये आंसर होता है. और यहाँ पे दिख रहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम्हारा रिंग के केस में, अलोंग द एक्सिस. सो इफ इट इज पॉजिटिव आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस, इफ इट इज नेगेटिव इनवर्ड अलोंग द एक्सिस. अब चलो एरिया एलिमेंट की बात कर लेते हैं. सो डिस्क में अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो बिकॉज ऑफ दिस एट पॉइंट पी, तो हमें पता है ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में. सो आवर एलिमेंट इज गोइंग टू बी स्मॉल एरिया. अब आप स्मॉल एरिया ऐसे पिक करना सच दैट यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू फॉर दैट, एंड दैट कैन बी रिंग हियर. सो रिंग को यहाँ पे आप कोई भी स्मॉल आर रेडियस का एक रिंग ले लो, और इस रिंग का थिकनेस कितना लिया है हमने? dr. सो इसका एरिया क्या हुआ? सबसे पहले स्मॉल चार्ज निकालने की कोशिश करो. सो एरिया इज हाउ मच? दैट इज योर 2 pi r dr. एरिया कभी भी पाई आर स्क्वायर मत लिखना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज ऑन दिस रेड कलर बाउंड्री, राइट? सो स्मॉल चार्ज वी आर कैलकुलेटिंग, ये एरिया ले लेंगे तो बहुत ज्यादा चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? सो स्मॉल एलिमेंट लेने का मतलब स्मॉल थिंग यू आर टेकिंग आउट ऑफ दैट बिग थिंग, राइट? सो दिस इज डी ए. डी क्यू तुम्हारा क्या होगा? दैट इज सिग्मा. अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, देन सिग्मा इंटू डी ए. सो दिस इज योर 2 pi sigma r dr. Now what will be the value of electric field because of this ring at this point? आपको पता है ये r रेडियस का है और ये डिस्टेंस लेट से x है. ठीक है, मैंने बोला ये वैल्यू तुम्हारा क्या है, ये r है, दिस इज x. So you already know what is the value of electric field for such cases. क्या होता है? So electric field because of this element at this point will be in this direction. We have already seen for the ring. So yeah, it will be in this direction. And value of electric field will be how much? K into Q, that is your 2 pi sigma r dr. So K Q and then X. So X यहाँ लिख दिया मैंने, divided by R का square plus X का square, and this is going to be your 3/2. सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू. अब देखो आप रिंग कहीं भी ले लो, जो भी रिंग होगा उसका सेंटर तो यही है, डन है, और उसका एक्सिस भी यही है. सो बिकॉज ऑफ एवरी एलिमेंटल रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी आउटवर्ड लाइक दिस. सो यू कैन सिंपली add the values scalarly in order to get net electric field at point P. Add it. R will vary from where to where? 0 to capital R. ठीक है, आप निकाल कर देखो कितना आता है. सो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, k 2 pi sigma एंड x, एंड देन दिस इज r dr डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड पावर कितना होगा? 3/2. अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? आई मीन दिस इज योर बेसिक चैलेंज, मैथमेटिक्स. सिंपल मैथमेटिक्स है ये, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो कैसे कर सकते हैं बताओ? यू डू वन थिंग, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को आप कुछ भी वाई स्क्वेयर मान लो. ठीक है, सो यहाँ से 2 r dr, एक्स तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, दिस इज 2y dy. सो आर डी आर को आप क्या लिख सकते हो? वाई डी वाई. सो आर डी आर को मैंने लिख दिया वाई डी वाई, और इसको मैंने क्या माना है? वाई स्क्वेयर. सो दिस विल बिकम हाउ मच? वाई क्यूब. सो दिस इंटीग्रेशन
सिंपल हो रहा है, डन है। सो dy बाई वाई का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/y। अब आप जो भी y को माने थे उसको आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, चलो कांस्टेंट को पहले लिखती हूँ, k 2 pi सिग्मा x। सो दिस इज k 2 pi सिग्मा x एंड देन -1/y, डन है। सो y का वैल्यू क्या होगा, √r² + x², and this is changing from where to where, I mean r was changing from 0 to r. Now put the values, okay। So k को आप ब्रेक कर लो, 1/4 pi epsilon naught, and this is 2 pi, this is sigma, this is x, and this is going to become how much, एक काम करती हूँ, माइनस को बाहर ले लेती हूँ, दिस माइनस दिस नहीं है, इनटू में है, समझ रहे हो ना। सो या दिस इज दिस वन, आर रखोगे 1/√r² + x², माइनस जीरो रखोगे 1/r को जीरो कर रहे हो, राइट। सो 1/x यू आर गोइंग टू गेट। और ऐसे भी देख लो, दिस टर्म इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस टर्म, क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ये डिनोमिनेटर छोटा है। सो दिस टर्म इज इनहेरेंटली नेगेटिव, इसका साइन ऑपोजिट कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस नेगेटिव साइन इनसाइड। सो यहां से हमें क्या मिल रहा है, देखो, σ/2 epsilon naught x, 1/x - 1/√r² + x²। अब आप एक काम करो, x को अंदर ले जाओ, σ/2 epsilon naught 1 - x/r² + x²√अंडर। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, डन। सो हमें मिल गया, ये बहुत ही फेमस सा इक्वेशन है जो आपको दिखता होगा। सो दिस इज दिस, ठीक है। चलो 3D डिमेंशन में चलते हैं, उसके लिए मैंने एक दिस सॉरी स्फीयर लिया है, and let's say we are interested in calculating its moment of inertia, so we are going to calculate its moment of inertia। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, एक स्फीयर को आप क्या मान सकते हो, एक स्फीयर को कह सकते हो ना कि बहुत सारे डिस्क ऐसे, जैसे ये है कैपिटल, इसका कैपिटल आर रेडियस ले लो, ठीक है। सो कैपिटल आर रेडियस का डिस्क मिडिल में है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे डिस्क को अगर मैं स्टैक करती जाऊं ऑफ डिफरेंट रेडियाई, स्टार्टिंग फ्रॉम आर टू जीरो, and this side also starting from r to 0, then we will get this solid sphere। hollow sphere बनाना है, then we can stack a ring of different radii, one on the top of each other। समझ रहे हो ना कैसे पुट करना है यहाँ पे आपको। दिस इज, जैसे मैंने ये बोला कि डिस्क को भी आप बना सकते हो बहुत सारे रिंग को ऐसे स्टैक करके, लेकिन उस केस में तुम्हारा रिंग को हमने एक प्लेन में रखा है, यहाँ पे वी आर स्टैकिंग इट इन अ, I mean in a different way, you can see, done है। So yeah, so how we can make this solid sphere, so solid sphere को we can make it like this, बहुत सारे डिस्क को स्टैक करके बना सकते हैं। जैसे आप सॉलिड सिलेंडर कैसे बना सकते हो, अगर आपके पास बहुत सारे 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का है, उन सारे सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाओगे, इधर भी रखते जाओगे, यू विल गेट अ सिलेंडर ऑफ सर्टेन लेंथ, राइट। सिमिलरली आपको अगर ये ऐसा सॉलिड स्फीयर बनाना है ना, ये भी 3D ज्योमेट्री है, ये भी 3D है, राइट। so that also you can make by stacking disk of, but here different radii, because this is like this, right। so what I wanted to say is कि इसका एलिमेंट डिस्क हो सकता है, डन है। और डिस्क के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, चलो सपोज कर लो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, और उसका वैल्यू होता है mr²/2। so here if we are going to take element disk, then for disk we know moment of inertia, okay। now let us calculate this one। मैं इसको करके दिखाऊंगी आपको कैसे कर सकते हैं, बताओ। सपोज कर लो कोई भी यहाँ पे एट हाइट जेड, लेट्स से एट हाइट जेड आई एम टेकिंग वन डिस्क लाइक दिस, ओके। सो मेरे डायग्राम थोड़े खराब होते हैं, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट वन। सो या दिस वन आई हैव टेकन, एंड दिस वन आई हैव टेकन एट जेड हाइट, बट मैंने इसका विथ डी जेड लिया है। जैसे 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 आप इस एक्सिस के ऊपर जा रहे हो, यू आर कवरिंग डिस्क ऑफ डिफरेंट रेडियाई, and let us take a disk at a height z whose thickness is dz। so you can see that the element that I'm taking is a disk of certain thickness, done है। so you can see this is a solid cylinder, done है। अगर मैं इसके हाइट को काफी छोटा कर दूं, काफी छोटा कर दूं, dz कर दूं, ठीक है। so this will look like a thick coin, done है, and that will look like a thick disk, okay। so that sort of a structure is this one। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें निकालना हो जैसे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आई इज इक्वल टू व्हाट,
एम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, राइट? सो डी एम आर स्क्वायर समथिंग. So first of all you need to calculate but this one we do, I mean, in general we write like this, but here first we will take the element, and because of element we will write moment of inertia. So better I will write here this thing, summation of all di's. ठीक है, so that is more general thing. सो लेट अस पुट इट हियर. सबसे पहले डी आई निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, डी आई क्या होगा तुम्हारा, डीएम, इसका रेडियस, लेट से इट्स रेडियस इज स्मॉल आर, सो डीएम आर स्क्वायर बाई टू. लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट डीएम. सो डीएम क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट, वॉल्यूम. सो एलिमेंट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. एलिमेंट इज व्हाट, डिस्क ऑफ सर्टेन थिकनेस. डिस्क का एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर, उसका थिकनेस डीजेट है तो वॉल्यूम क्या होगा, पायर स्क्वायर डीजेट, जस्ट लाइक द वॉल्यूम ऑफ thick cylinder. Then it's cylinder of very small thickness dz. So it is this way. Now what will be its mass? So this is the volume, mass will be this into density. And what will be density, let's say its mass is m and its radius is r. So density can be written as what, mass by 4 by 3 pi r cube. So चलो ऐसे ही लिखते हैं. पाई पाई को मैंने किया कैंसिल, एंड यहाँ से आपको क्या दिखने वाला है, सारे टर्म्स को सही से लिखना. सो दिस इज योर 3r² m dz divided by 4r cube. Okay, so this is your dm. Now what will be di? Di आप क्या लिखोगे, dm को लिख लो 3m r² dz divided by 4r cube. So this is mass into r का square by 2. So what we are going to get, 3 by 4 m, this is r cube and this is r4 dz and this is 2, right? So इसको 8 कर लो आप. So r4 dz. So here we are getting two variables. If we have to calculate total moment of inertia, we need to integrate, and there are two variables, so small r and z. So we need to convert one into another. और यहाँ पे आप clearly देख लो, अगर इसका radius capital R है, and if at this point you have taken one disk which has a radius of a small r, and this one you have taken at a height of h. So you can clearly write here, sorry height z लिया है ना हमने. सो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आर का स्क्वायर. सो आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर. सो दैट थिंग वी विल पुट देयर. ओके, सो आर फोर डी जेड चलो कर लेते हैं पहले. आर फोर क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर dz. This is what we need to integrate, and z will vary from where to where, from here to here, right? So from minus z to plus z. So from minus z to plus z, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 0 to z भी लिख सकते हैं. That we will be doing. So 0 to z 2 into, इसको आप स्क्वायर कट कर, I mean expand कर लो. So r4 plus z4 minus 2, this is, yeah, 2r square z square, and this is your what, dz. Now do the integration. Integration बहुत ही simple है, right? So this is your r4 तो तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट? या सो दिस इज r4z and this is going to be z4 है, that will become z5 by 5 minus 2r square, z square dz कितना होगा, z cube by 3. Now put the value of z here. Z will, you will be putting as equal to r. So 2, this will become r5 minus, that is r5 by 5. So that is r5 by 5. Okay, and then this is 2r5 by 3. So this is माइनस है या प्लस, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया, प्लस है ना ये, हाँ प्लस है, और ये माइनस है ना, ये प्लस है ये माइनस है. सो 2r5/3 है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट इज दिस. अब आप इसको सॉल्व कर लो पहले. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 15 कर लो. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 15r5 प्लस 3r5 माइनस 10r5 divided by 15. So this is going to be how much, 2 into 8r5 by 15. So 2 into 16 by 15r5. So integration हमें कितना मिला, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं. सो फाइनल आंसर यू विल बी गेटिंग एज 3/8 m/r³ and this is that was 16, right? 16/15 and this was r5. So this is what you are getting, है ना. आंसर तो आ गया हमारा 8 से 2 and this is 3 से 5. So this is
m 2 by 5 mr square, right? So दिस इज वन वेरी फेमस थिंग। डन है। सो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना आप करने का, जैसे बहुत बार बच्चे करते हैं दैट यू आर टेकिंग अ डिस्क हियर एंड दे ट्रीट इट लाइक ओके, यहाँ पे ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, देन आर बाई आर को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। सो आर विल बिकम इक्वल टू हाउ मच, आर साइन थीटा। और यहाँ पे डी आर को लिख थिकनेस कुछ भी डी आर ले लेते हैं, आर डी थीटा नहीं कर सकते, दैट वी डू फॉर 2D प्लेन थिंग्स, राइट? सो डोंट डू दैट मिस्टेक। Okay, so I tried explaining through examples, also conceptually, how you can deal with continuous charge or mass distribution thing. Okay, so taking the element, how you will decide taking the element based on charge, mass, or whatever is distributed on length, area, or volume. Okay, and then for that element you should be knowing the formula of whatever you're going to calculate, and then finally you have to integrate. While integrating you should be knowing the basic mathematics. So I hope it is clear, but in case you are having any doubt or you want anything else to get discussed, you can always let me know in the comment section. Thank you, take care of yourself, bye bye.